topic is there? Yeah? Some bliss. How to be blissful. This is our topic. तो आज हमारा जो विषय है वो है how हम कैसे पूर्ण आनंद में रह सकते हैं. So it's good to know how not to be, what will not give us bliss also. तो हमें क्या कैसे bliss मिलेगा? Yes. ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. ये संस्पर्शजा भोगा. Maybe this does not do translation. It's already same. So here Krishna says in Bhagavad Gita 5:22 that the intelligent person is not how to say, yehi samsparshaja bhoga, that bhoga, the sense gratification, enjoyment comes from the contact of the senses with the sense object. तो जिस तरीके से भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं किस तरीके से यही संस्पर्शजा भोगा, जो इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से जो हमें आनंद मिलता है. And we think this is the source of our happiness. तो वो जो आनंद हमें लग रहा है वो वास्तविक दुख है, दुख का कारण है, तो वो हम सोचते हैं कि वो हमारे आनंद का कारण है. But Bhagavad Gita informs us that this is actually dukkha yoni, or the source of yoni, the womb. It's the source of suffering. तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का जो संपर्क है वो वास्तविक में भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं वो दुख का कारण है. उससे दुख योनि उत्पन्न होता है, वहाँ से दुख उत्पन्न होता है. So although everyone is able to experience this actually in his daily life, that this is like that my trying to satisfy my senses brings me suffering. तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में डेली अनुभव कर रहा है किस तरीके से मैं जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो मेरा प्रयास है वो मुझे दुख उससे मिल रहा है. The people think that the solution is to find another kind of sense enjoyment to rectify it. तो सामान्य लोग जो अपने दुख को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अपने अलग दूसरे तरीके से इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाना. If you buy a car and you are not so happy with that car, then you think the solution is to buy a better car. अगर आपने कोई कार खरीदी और उस कार से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या उपाय निकाल रहे हैं कि आपको दूसरी कार खरीदनी चाहिए. If you have a girlfriend and you realize it is very difficult to relate with females, then you try to find another female and you hope it will be better. तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसके साथ रह रहे हैं, अगर आपको उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आप विचार कर रहे हैं कि मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा या मैं पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा दूसरी कोई गर्लफ्रेंड बनाने का. If you are not happy in Bhopal, you want to move to Mumbai, and if you are not happy in Mumbai, you want to move to London. तो अगर आप भोपाल में संतुष्ट नहीं है तो आप मुंबई जाएंगे, अगर मुंबई में संतुष्ट नहीं होंगे फिर आप लंदन जाने का प्रयास करेंगे. And in London it will be everything will be perfect. और आप सोचेंगे कि ये लंदन में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा. This verse does not apply to London. लेकिन ये इस तरीके से लंदन में अप्लाई नहीं होता. Everybody is happy there. और आप ऐसा सोचेंगे कि वहाँ तो सब लोग खुश हैं. Joking, of course. And and why it is like this? One of the reasons, just given here in this verse, is that all sense gratifications, it has its adi and anta. That means beginning and end. It's always just starts and ends, and actually that goes very quickly. तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं जो इंद्रियों और इंद्रियों विषयों का जो संग है, जो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संग में आने की संतुष्टि मिल रहा है, उसका क्या है, उसका एक आदि है और एक अंत है, उसका बिगिनिंग भी है और एंड भी है, तो बहुत छोटा है. There is one example. When you come to desert, anybody of you have seen the desert? तो उदाहरण के लिए आपने किसी ने एक डेजर्ट देखा है, रेगिस्तान देखा है? Where is the closest desert? In Rajasthan? Yes. Yes. Okay. So if you come to desert, there is no water. अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ कोई पानी नहीं है. And this is a small desert, but Sahara, in Africa, this is very vast, very big desert. Hundreds and thousands of miles, nothing than just sand. 100 or thousands miles बड़ा आपने सुना होगा सहारा डेजर्ट, बहुत अफ्रीका में है. यहाँ कोई दूर दूर तक
रेगिस्तान वाली साइड भी है. So one example given by one devotee, which I have heard, interesting example, is that you are in the desert and then out of nowhere, one person comes in an ice cream, small trolley with ice cream. तो आप एक बहुत उदाहरण देते हैं उसको हम समझते हैं. जिस तरीके से एक व्यक्ति है वो बहुत बड़े रेगिस्तान में, वहाँ एक ट्रॉली आइसक्रीम का आता है. So you are completely, sweating from the heat and you are thirsty, and then the ice cream wala comes and he sells you ice cream and you are, wow, Jai, so what kind of flavors do you want? Yes, I want this strawberry and this vanilla and this pistachio, different flavors you choose. तो आप बहुत प्यासे हैं और आपको सामने अलग अलग आइसक्रीम के फ्लेवर्स पूछे जा रहे हैं, तो आप विचार कर रहे हैं कौन सा फ्लेवर लेना है. So he prepares nice big ice cream for you and he asks money, of course, and you have to pay. तो जो आइसक्रीम वाला है उसने आपके लिए बहुत सारी आइसक्रीम और अच्छे से लेकर आया है और वो आपको आइसक्रीम के बदले में आपको पे करना होगा. And you are very excited now I will relieve my suffering. और नाउ आप जिस विचार कर रहे हैं, ओ अभी मैं इसको लेने के बाद बहुत सारी मेरी सफरिंग दूर हो जाएगी. And just when you pay, everything disappears. तो जैसे ही आप उसका पे करेंगे तो there is no ice cream wala, and also your money is gone. तो आप जैसे ही पे करेंगे आप देखेंगे ना वहाँ कोई आइसक्रीम है, ना कोई आइसक्रीम वाला है, ना कोई है ही नहीं. So only thing which was real is that you lost your money. तो वहाँ बस वास्तविकता क्या थी, जो आपने अपना पैसे का व्यय कर दिया. So when we try to enjoy in this world through our senses, we get nothing, but we have to pay. The karma is there. तो इसी तरीके से इस भौतिक जगत में जब हम इंद्रिय संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बदले हमें वास्तव में क्या मिलता है, हमें कर्म, हमारे कर्म. And that karma will have to act. So this is our payment. Yeah, we will get some suffering for enjoying. तो हम अपने जो कर्म करते हैं, जो जिस तरीके से कर्म फल के कारण हमें फिर सफरिंग मिलती है. So yeah, it's like another example is that we are in the desert and we have little sense gratification. It's just like a drop in the desert, a drop of water, one drop of water. So when you are completely scorching heat and you are sweating and everything, and you get one drop of water, sense gratification. तो और दूसरा उदाहरण क्या बताया गया है इंद्रिय भोग का, कि किस तरीके से जो रेगिस्तान में एक व्यक्ति बहुत प्यासा है, पूरा पसीना ही पसीना है, बहुत गर्मी में है, और उसको फिर एक बूंद मिल रही है, तो वो है इंद्रिय भोग. एक बूंद उसको प्राप्त होकर वो विचार कर रहा है वो कितनी संतुष्टि है. What is bund? Drop, bund. Yeah. Okay. So yeah, and this is like that. Whatever happiness we get in this world is just a small drop in the desert. तो इस भौतिक जगत में जो भी हमें आनंद मिल रहा है वो किस तरीके से है, जिस तरीके से रेगिस्तान में एक पानी की बूंद. So how I can be blissful? तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? Because anandamayo bhyasat, yeah, we are all searching for bliss. आनंदमय अभ्यासात, हम हमेशा आनंद की खोज में हैं. All our life is just adjusting everything so we can feel some happiness or at least a relief. तो हमारा पूरा जीवन किस तरीके से चल रहा है कि हम वास्तविक में आनंद को अनुभव कर पाए, आनंद ले पाए. We want to sit comfortably and always adjusting, so nothing is paining. तो हम हमेशा बैठते हैं तो सोचते हैं कैसे मैं हर जगह किस तरीके से. And it's cold, so we need to cover and feel warm. तो अगर सर्दी है तो हम कैसे संतुष्ट होने का प्रयास करें, अलग अलग कपड़े पहन के. And then in the winter it's too cold, in the summer it's too hot, so then we need AC just to survive. तो जो सर्दियाँ हैं उसमें हमें सर्दी लग रही है विंटर में, और समर है तो गर्मी लग रही है तो उसमें हम एसी लगा रहे हैं. And today is fasting, fortunately only till noon, so we will survive. तो आज 12 बजे तक फास्टिंग है, तो so we will be hungry before the lunch. तो हम लंच के पहले भूखे होंगे. But after the lunch, after the feast, we will be completely overeaten and we don't want to see food anymore again. और जैसे ही हम बहुत हमें जो भूख लग रही थी बहुत अच्छा फीस्ट ले लेंगे, उसके बाद हमारी स्थिति होगी कि हम नहीं अभी देखना भी नहीं चाहते होंगे उसको. I will never eat like this again, never. It's too much. अगर हम ओवर ईटिंग कर ली तो हम सोचेंगे नहीं मुझे अभी दोबारा नहीं खाना है. We want to sleep.
मैं सोना चाहता हूँ. And when we sleep too long, we are dull. और हमें बहुत हम लंबी समय तक And when you get little old and you sleep too long, then you get the back pain. लंबे समय तक सोएंगे तो हमें बैक पेन हो And जाएगा. always adjusting, always seeking some happiness, but it's disappearing like this ice cream. It's almost there, it's not there. Almost there, not there. Like that. तो हमारे साथ पूरा किस तरीके से हो रहा है, हम इतने सारे प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आइसक्रीम वाले को वो आया है सामने, जैसे ही हम उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है. And almost the happiness was not there, we are getting the reaction for our trying to enjoy material nature. और जैसे ही हमें हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है तो हम अलग ट्राई कर रहे हैं. Of course, especially more if we do it through the not dharmic means or sinful means. तो इसको बताइए किस तरीके से हम जो पाप में नहीं करते हैं, अगर उसको धर्म के तरीके से नहीं करते हैं तो. Yeah. So that's it's an unfortunate situation. Yeah, everybody is caught in this loop, and just do not. Whatever you do, you become more entangled. तो ये दुर्भाग्य है कि हम सब इस जाल में और इस लूप में फंस चुके हैं. तो And actually, the more you will be able to enjoy, if you will be successful in enjoyment, actually, you will become even more unhappy. You will become depressed. Many people have, you are rich, you have a sense enjoyment, everything is there, but still inside, you will become very weak, mentally, and actually, you will not be very happy. वास्तविक में जो ये भौतिक भोग है, इंद्रिय भोग है, इससे हम इसको जितना लेने का प्रयास करेंगे उतना ही हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, हम मेंटली वीक होंगे और हमें वास्तविक में संतुष्टि नहीं अनुभव होगी. Because this body is made for performing austerities. This is how it was made. Because क्योंकि ये शरीर तपस्या के लिए बना है, इसीलिए इस तरीके से इसको बनाया गया है. If we try only to enjoy through the body, this body will become weak, mind will become weak, it will become sick mentally, physically, and it will not function properly. अगर हम इस शरीर को भौतिक भोग करने के लिए यूज करते हैं तो हम अपने मानसिक रूप से इस शरीर हमारा पूरा कमजोर हो जाएगा. So even in material sense, if we are austere and go through some difficult or austere conditions or situations, challenging situations, it will give us more pleasure actually than if we just are lazy and enjoy and just do nothing. तो अगर हम भौतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखें तो अगर हम तपस्या करते हैं, अलग अलग चैलेंजेस लेते हैं और इस तरीके से कठिन कार्य करते हैं तो वो उसमें ज़्यादा हम संतुष्ट होंगे बजाय हमें आलस बने रहे, आलसी बने रहे या फिर भौतिक एंजॉयमेंट का प्रयास करें. So therefore we see that many people are going for some adventures which are not very much comfortable, but they feel they achieved something. They climbed some very high mountain peak and they are going there, it's freezing and they're exhausted, but they go there and it's really suffering. But when they reach it, they feel achieved something. It gives them some sort of happiness, which is actually bigger happiness than just sitting, watching the TV and eating, chips and drinking beer and become completely dull like this. तो ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग माउंटेन पर्वतों पर चढ़ने जाते हैं तो और वो बहुत सोचते हैं कि हम बहुत एडवेंचर करेंगे. इस एडवेंचर में वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग कठिनाई ले रहे हैं. उस कठिनाई में उनको ज़्यादा संतुष्टि अनुभव हो रही है बजाय वो घर बैठ के जो टीवी देख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, उससे ज़्यादा उनको जो तपस्या कर रहे हैं उसमें उनको ज़्यादा आनंद आ रहा है. So you say beer in Hindi? Beer in Hindi? Sarab. Okay, our country is very famous for beer. I never drank beer. Little when I was young, when my father finished when I but when I was 11, I decided I will never drink alcohol. It was not for devotional reasons, but I didn't want to be that stupid. And therefore people also do for some sports, if you train for, sport, you suffer, basically. Your trainer is going to give you a proper suffering, you will just
You will be exhausted like anything, and then the final match is there. You will be suffering. I will win, or no. But then you make it, and then you feel some happiness. तब देखते हैं किस तरीके से जो अलग अलग खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसमें हम देखते हैं जो ट्रेनर है वो कितनी सारी कठिनाई देते हैं, हमें आराम से नहीं रहने देते, बहुत सारी कठिनाई देते हैं और हम बहुत सारा खेलते हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं और एंड में जो हमें मिलता है तो हमें उसमें लगता है हम संतुष्ट हैं. But even in that suffering, people feel some happiness. You know, there is some challenge to overcome, so people feel some happiness in it. तो हम देखते हैं कि इवन भौतिक जो कठिनाई लेने में लोगों को वास्तविक में संतुष्टि की अनुभव हो रही है. So this is a little reflection of the real austerity, spiritual austerity, that even in material sense, if we become austere, we become actually more healthy and mentally together and more focused and more basically happy people. इसलिए वास्तविकता की क्या है, वास्तविक में परछाई है जिसमें हम लोगों को वास्तविक में जो कठिनाई लेके अलग अलग तपस्याएं करके हमारा जो मन है, हमारा जो बॉडी है, उसको भौतिक रूप से अगर देखें, भौतिक परिवेश में, तो हमें संतुष्टि मिल रही है. When we perform a spiritual austerity, that actually gives the spiritual bliss. The result is completely on different level. So on this material level, it's again temporary, of course. It's better than just dull sense enjoyment, but still the result is very temporary. But on the spiritual level, it becomes real. तो अगर हम भौतिक परिप्रेक्ष्य से तपस्या करते हैं, कठिनाई लेते हैं, तो हमें जो आनंद मिलता है तो वास्तविक में परछाई है, वो बहुत कम है, वो बहुत टेम्पररी क्षणभंगुर है. लेकिन वही दूसरी तरीके से अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिकता के लिए तपस्या करते हैं, अलग अलग कठिनाई लेते हैं, तब हमें वास्तविक में वास्तविक आनंद का अनुभव होगा. Many people who come to spirituality today, they have the idea, I will become spiritual, so I will become happy, but spiritual means I will just do whatever I feel. तो बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और सोचते हैं मैं जो आध्यात्मिकता का पालन करूँगा तो मुझे बहुत संतुष्टि होगी, मैं जो भी मैं वो करूँगा जो मैं फील करूँगा, इस तरीके से. My feelings are spiritual and I feel I want to sleep now. इस तरीके से बात जो लोग बोलते हैं कि मेरी जो भावना है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, मेरी भावना आध्यात्मिक है. Oh, this girl is so beautiful shapes, I want to enjoy that and feel this is very spiritual desire. It's coming from my heart, so it must be spiritual. जब मैं कोई सुंदर स्त्री को रूप देखता हूँ, सुंदर स्त्री को रूप form and स्त्री को woman, yeah. It's like in Sanskrit. मैं सुंदर स्त्री का रूप देखता हूँ तो मेरे हृदय से जो भावनाएं निकलती हैं और उसको जो आनंद लेने के लिए, तो मैं सोचता हूँ ये मेरी आध्यात्मिक भावना है. And this स्त्रीका also feels that she has some spiritual desire. She also feels some spiritual desire. जो स्त्री है वो भी इस तरीके सोच रही है कि वो उनको जो भावनाएं आ रही है हृदय में वो क्या है, आध्यात्मिक है. So the result will be some spiritual children. तो इसका परिणाम है वो फिर आध्यात्मिक बच्चा होगा. But then a lot of work which does not seem to be so spiritual. फिर आपको बहुत सारा कार्य करना होगा उसके लिए जो आध्यात्मिक नहीं होगा. So we leave that woman, we leave those children and find some other spiritual thing in our life. तो फिर हम जो पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी तरीके से आध्यात्मिक. Because our heart says, oh, this is not any more place for me. तो my heart is turning to go somewhere else. तो जो हमारा हृदय है उसमें आता है कि अभी मेरे लिए ये जगह नहीं है जहाँ मुझे आध्यात्मिकता का भावना है और मुझे संतुष्टि मिलेगी, तो ये मुझे जो फीलिंग्स हैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वो मुझे कहीं और जगह मिलेंगी. So there are many spiritual yogis from India going to West and teaching nice girls yoga. तो ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो भारत से विदेशों में जाते हैं और वहाँ सुंदर स्त्रियों को योगा करना सिखाते हैं. And these nice Western girls, you know, white girls, blonde hairs, perfect body, they will dress in such a way that it will be very nice. तो वहाँ जो स्त्रियाँ हैं फॉरेन वेस्ट में, पाश्चात्य देश में, वो इस तरीके से कपड़े पहने हैं, उनका जो बॉडी है वो वाइट है और वो ब्राउन. And Guruji is very happy. इस तरीके से जो गुरु हैं, जो योगी हैं, जब पाश्चात्य देश जाते हैं तो वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं सब देख के.
And then teach them different shastras. You don't want to mention like Kama Sutra and something like that. Yeah. Spiritual. Spiritual knowledge of India. तो फिर वो जो गुरुजी हैं जो आध्यात्मिकता का पालन करने वाले वो वहाँ जाके जो स्त्री हैं उनको अलग अलग शास्त्र सिखाते हैं और उन शास्त्रों में भी काम सूत्र अलग अलग शास्त्रों को बताते हैं क्यों क्योंकि वो तो आध्यात्मिक है. Basically big part of the people practicing yoga is just to have better sex. तो बहुत सारे लोग इन शास्त्रों को और योग को प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ के लिए जिससे वो बहुत आसानी से अच्छे से संभोग कर सकें. So it is interesting, of course it's obvious for us, but it's interesting for general people in general that if you want to be happy, blissful, you have to go for austerity. तो ये जो श्लोक है भगवद गीता में हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक जीवन के लिए साथ में इवन भौतिक परिप्रेक्ष्य भौतिक लोग हैं वो इसको समझ सकते हैं श्लोक से कि हमें अगर आनंद चाहिए तो हमें कठिनाई लेनी होगी. तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम. So if you perform this tapo divyam, brahma saukyam, the transcendental happiness will be the result. जैसे हम सुनते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम यस्मात् शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम कि अगर जब हम ये आध्यात्मिक रूप से तपस्या करते हैं तो हमें वास्तविक में क्या है संतुष्टि मिलेगी. So actually this is the key from Rishabhadev, telling us that this is the key to happiness. Tapodivyam. तो ये चाबी दे रहे हैं ऋषभदेव हमको वास्तविक में कैसे हमें आनंद मिलेगा. तपोदिव्यम. Yes, so we have received this rare form of life, human form of life, and you even born in Bharat. So we have to use that form of life for the purpose for which it was created. तो हम सबको ये मनुष्य जीवन मिला है और आप लोग सबको इस भारत में जन्म मिला है तो आपको बहुत अच्छा अवसर है जिस चीज़ के लिए जिस कार्य के लिए शरीर को बनाया गया है उसको करने का. Not for the purpose which can be, for which even pigs live. For sense gratification, which is available even to hawks and dogs. तो उसके उस उद्देश्य के साथ हमें इस मनुष्य शरीर का उपयोग नहीं करना है जो बाकी जो उद्देश्य हम अलग अलग शरीरों में सुअर जीता है और अलग अलग पशु जीते हैं. And it is said also in Bhagavad Gita that if we are bhogaishvarya prasaktanam tayapaharata chedasam vyavasayatmika buddhir samadham na vidyate. If we are attached to sense gratification, we will not have focused, intelligence and focus on spiritual life, and we will not really achieve this spiritual happiness. जैसे भगवद गीता में देखते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कि अगर हम इंद्रिय भोगों में लिप्त हैं इंद्रिय भोग करने का प्रयास करें तो हमारी जो बुद्धि है ये व्यवस्थित नहीं होगा. हम आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है उसमें हमारी जो बुद्धि है वो स्थित नहीं हो सकती अगर हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं. So if we perform austerities with our body, the happiness, spiritual happiness will be there. तो हम अगर इस शरीर में तपस्या करेंगे तो आध्यात्मिक तपस्या करेंगे तो हमें वास्तविक में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा. But also we have to remember that we should perform austerity which is in accordance with Shastra, not something artificial. तो हमें जो ये तपस्याएं करनी है वो शास्त्रों के अनुसार करनी है ना कि कृत्रिम रूप से. And also we have to remember that we are still in Kali Yuga and our bodies are not suited for extreme austerity as it was possible in previous ages. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा शरीर है वो कलयुग का है तो जिस तरीके हम बहुत सारी तपस्याएं नहीं कर सकते हैं जो तपस्याएं हम पिछले युगों में कर सकते थे. What river you have here? What river you have here? नर्मदा. Narmada is going here? Oh, it's Narmada here. So, and Narmadapuram is down the stream, yeah? It's down the stream. I see. So, we have holy river Narmada. So, in the winter, of course, winter here is not that strong as in Himalayas, but still it's kind of cold, I guess. What is the lowest temperature, night temperature? 4, 5? 5.
5, 6, yeah, something like that. So you do not have to go through the whole night sitting, you know, in Narmada River and perform austerity. तो आपको इस तरीके से तपस्या नहीं करनी है कि गए हम नर्मदा में 4-5 डिग्री सेल्सियस में रात में पूरी रात बैठे हुए हैं. Or in the scorching heat to make fires around you and one oil on your head and sitting then on the sun and all very austere yogi. और बहुत तेज ताप में हम अपने आप को बैठ के उससे तपस्या करने का प्रयास. Or there are also different tamasic types of austerity. I think some Durga worshippers will do some, you know, cutting and piercing and some hooks, you know, to your back, you know, and then hanging on it. Very austere. ना ही तमोगुणी तपस्या में देखते हैं अलग अलग जो दुर्गा देवी पुजारी या उनकी जो पूजा करते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने आप को चाप मारना, इस तरीके से हुक करना, इस तरीके से हमें नहीं करना. So you know, we have our simple austerities. तो हमारी जो तपस्या है बहुत सरल है. To wake up in the morning before the neighbors. To wake up the neighbors, this is also austerity. Then not to eat food which was not cooked by devotees and offered to the Lord with love and devotion. तो हमें ऐसा कोई जो भोजन है उसको नहीं करना है बिना भगवान को भोग लगाए. So that's austerity. You have to manage your life accordingly. But finally you get nice prasadam, so it's not that hard. तो वास्तविक में तपस्या बहुत सरल है क्योंकि हम जो भी तपस्या एडजस्ट कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार अल्टीमेटली वो हमें जो भी प्रसाद जो भी हम भगवान को लगाएंगे अल्टीमेटली बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा. And read Shastra, this is considered great austerity actually, to read Shastra. तो वास्तव में शास्त्रों को पढ़ना जो हम देख रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है. Although actually it gives us bliss, yeah, to read Bhagavad Gita and srimadbhagavatam is very, very nourishing. But this is austerity actually. वास्तविक में हालांकि भगवद गीता है श्रीमद्भागवतम है इनको पढ़ने से हमें वास्तविक में संतुष्टि अनुभव होगी. Chanting the holy name, this is the greatest austerity. भगवान के नाम का जप करना ये बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है. Kirtan we sometimes enjoy, but japa sometimes difficult, yes. To feel some bliss, sometimes we feel different feelings. तो हम जब तो वास्तविक में तपस्या है जप करना, हम जब करते हैं तो बहुत कठिन है हमें आनंद का अनुभव कर पाना और कभी-कभी हम दूसरी तरीके की फीलिंग्स आ जाती हैं. Or after finishing 16 rounds, we realize, oh, finished. I thought so many things, you know, I went through my mind, but no, not even one holy name. जब हमारी 16 वाला हो जाती तो मैं समझ में आता है कि मैंने इतने माला कर लिए लेकिन एक ही बार में इतनी सारी चीजें मेरे माइंड में थी. We thought all about all topics, you know, during the chanting, and we planned our whole day and the whole life maybe during the time, you know. So many thoughts came, you know, chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, the breakfast will be like this, Hare Krishna, Hare Krishna. Then I go to school, yeah, and I have to manage like this, I will look like that, and finished. जब करते ही समय हम अपने आज का पूरा शेड्यूल या पूरे जीवन का पूरा शेड्यूल पूरा डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है. Or chanting and just not going on, how many more, you know, Hare Krishna. No, still 15 rounds, you know. और जब करते समय छीना देखते हैं अभी कितनी माला बची है, माला को देखते हैं कितना बचा हुआ है और सोचते हैं अभी तो बहुत बचा हुआ है. So we sit somewhere and somebody else also chants and we chant, you know, together, so it goes little quickly. Time runs, you know, more quickly. और कभी-कभी हम चैंट और चैट दोनों किसी व्यक्ति पास किसी पर्सन के पास बैठ जाते हैं और थोड़ा बहुत ब्रेक भी हो जाएगा साथ साथ जब होगा तो बात भी करते हैं. Of course, the worst thing is like this, yeah, you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna, Krishna Hare. With this finger, that's good, yeah. Out, so you can nicely press the button. इस तरीके से फोन में सोचते हैं अच्छा उंगली है इसको यूज करने के लिए तो आराम से जब करते हैं उस उंगली से. I think 2 rules should be applied in ISKCON. One, we should change the type of beadbag. We should put something here so this is closed. ISKCON में 2 नियम लगाने होंगे. एक इसमें से कि जो beadbag है इसमें जो उंगली बाहर निकालते हैं. Sometimes you have these winter beadbags, you know, these winter ones. It's fully covered with nice thick cloth. So maybe this could be done. तो इस तरीके से विंटर
जो सर्दियों वाला बीट पे गाता है उसमें आ गया। And another rule should be that you can use smartphone only with your right hand. या फिर रूल होना चाहिए कि आपके जो स्मार्टफोन There है should be a rule, no left hand for it. You cannot touch left hand smartphone. Only right hand. So that means you have to pull it down, and then you can use. दूसरा नियम होना चाहिए कि हम जो फोन है उसको राइट हैंड से पकड़ें, जिससे हमें जब फोन But now no rounds are going on, so okay, I have to chant, or so we have to decide, what we want to do. We cannot do both. फिर हमें डिसाइड करना होगा राइट हैंड से चैंटिंग करनी है या माला चैंटिंग करनी है, फोन यूज करना है। And then we go for preaching. This is austerity. तो और फिर हम और क्या तपस्या है, प्रचार करना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। And people will tell us some nice things also. What is this, your Krishna? And, you will meet Christians, you will meet Muslims, you will meet Hindus, different people. क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे, हिंदू लोगों से मिलेंगे, मुस्लिम लोगों से मिलेंगे, बोलेंगे कौन है कृष्णा ये। I guess not all Hindus appreciate Krishna, don't you say? Not all of them. और बहुत सारे हिंदू भी भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। They will say, no, we will worship our Ganesh. He is our favorite, not your Krishna. हमारे गणेश फेवरेट है। Or Mayavadis, they will challenge you. It will be an austerity. And it will be hot outside sometimes and raining or, big traffic, and you distribute books and it's... तो हम देखते बहुत से मायावादी मिलेंगे, फिर हम जब प्रचार करने जाएंगे तो बारिश हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है। So we do not have to search for austerity. Just if we perform nicely devotional service, the austerity included in it, it's that austerity which is meant for us. हमें अलग से कोई तपस्या को अपनाने का, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली जो ऑस्टेरिटी वो इंक्लूड है। You don't have to run outside in the winter in just coping, just to show how austere you are. तो हमें सर्दियों में ऐसे भागने की जरूरत नहीं, दिखाने के लिए हमें ऑस्टेरिटी करनी है। We cover the body when we feel cold. But even when we feel a little cold, when we do our service, we do it just because it's needed for Krishna. अगर हमें सर्दी लग रही है तो हम कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें सर्दी है, जो भी सेवाएं हैं उसमें सर्दी है, फिर भी हम सेवाओं And the happiness is there, and we mentioned already. When we read spiritual literature, for me it was one of the. When I started to read Prabhupada's books, it was so blissful. It was just never read something like that. तो हम देखते हैं ये जो आध्यात्मिक पता है, इसमें बहुत वास्तविक में बहुत आनंद है। जैसे कि मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैंने पहली बार srilaprabhupad की बुक्स पढ़ी तो मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा था वास्तविक में। I remember when I purchased the first canto of Bhagavatam, it was in a shop on the farm in Czech, which I visited, and it was in the bookshop, which was full of all incense and everything, and there was very special smell. And sometimes books had that, there's special of this glue and like that special smell is there. So that was really special smell. I think it was a spiritual smell. तो मैं एक चेक में शॉप थी, वहाँ विजिट किया और वहाँ बहुत सारे अगरबत्ती रखी हुई थी, बहुत पूरा भरी हुई थी शॉप, वहाँ एक फर्स्ट कैंटो रखा हुआ था। तो मैं जैसे ही उसको स्मेल किया तो मैं सोचा था ये आध्यात्मिक। So I opened it with great awe and reverence, and I smelled, wow, this is Bhagavatam. And I started to read, just wow, this is what Prabhupada writes very slowly, just slowly eating the letters. तो मैंने जो भागवतम है उसको ओपन किया, उसको स्मेल किया और फिर उसको जब आदर के साथ पढ़ना चालू किया तो मैं वो एक शब्द को ले पा रहा था। And when I read the first shloka, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Tonvayat, this long purport there, I finished that purport that day and I closed it. I will keep the next verse for tomorrow. मैंने पहली बार पहला श्लोक पढ़ा, इसको पूरा अच्छे से पढ़ा और मैं विचार कर रहा था कि किस तरीके से मैं जो अगला श्लोक है वो अगले दिन के। Like sometimes you get some sweets, and you don't want to finish all of them at once. You keep little for later because you want to
spread your enjoyment through the whole day. तो हम सामान्य देखते हैं हमारे पास अगर कोई बहुत अच्छा स्वीट है तो हम कुछ उसको खाते हैं, कुछ रखने का प्रयास करते हैं जिससे हम पूरे दिन उसको खाएं. Next day I read also one shloka and said next day. और फिर अगले दिन मैंने अगला श्लोक पढ़ा और मैं सोचा अभी अगले दिन पढ़ूंगा. And after that I continued normal because purpose got little shorter, but that was the mood. तो फिर मैंने वो जो पर्पट थे वो छोटे थे तो उस कारण से मैं ज़्यादा पढ़ने लगा और लेकिन मैं इस मूड के साथ पढ़ रहा था तो वास्तविक में कितना आनंद आ रहा था. And another ecstatic thing which was full of happiness was when I was able to visit devotees. और दूसरा जो मेरे लिए एक्सटेटिक था, बहुत आनंदमय था, वो था जब मैं भक्तों से मिला. In first 2 years of my devotional service, I was able to meet devotees maybe once in a month or less. In the beginning less, a little later maybe once in a month, twice in a month. तो जो स्टार्टिंग की जो मेरी भक्ति की 2 साल थी उसमें से मेरा जो भक्तों का संख्या था वो बहुत ही कम था, एक या 2 बार एक मंथ में. Whenever I came to the temple, I wanted to do all the services. जब भी मैं मंदिर आता था तो मैं सारी सेवाएं करना चाहता था. Okay, reading I can do at home, enough reading, I can read. But here I'm in the temple with devotees, I want to do as much service as possible. Everything, I was running everywhere, doing everything, cleaning. तो मैं जब भी मंदिर जाता था तो पूरी सेवा करने का प्रयास करता था क्योंकि मैं पढ़ता हूँ घर में भी कर सकता था, लेकिन जो भी सेवाएं भी मैं पूरी तरीके से सेवा करूँगा मंदिर में. So that's another bliss, when you see devotees happy with your service, it's such a bliss. तो फिर ये दूसरा हमारा आनंद का अनुभव कर सकते हैं जब हम भक्तों को हम सेवा करते हैं और जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो उससे हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है. And then preaching, book distribution. Although it's very challenging, and not many people are actually willing to do that on a regular basis. Actually, behind that suffering, which is obviously also there, is a great nectar. तो हम जब भगवद गीता फिर दूसरा और हमें आनंद किससे मिलता है? प्रचार से. जब हम भगवद गीता का शास्त्रों का वितरण करते हैं तो जब ये लोग बहुत कठिन लगता है, उसके पीछे में बहुत कठिनाई आती है देने में, लेकिन उसके पीछे क्या है? वास्तविक में आनंद का अनुभव है. Yeah, when you are there and you go through it, it's cold and wind is there and rain is strong and you have your umbrella and nobody wants to stop because it's heavy weather, nobody wants to stop, and you feel they should feel for me, I'm standing here frozen, wet, and they should appreciate, but they will not appreciate. Get out of my way, I don't want to be wet like you. तो हम देखते हैं, हम जब पुस्तक वितरण करते हैं अलग अलग सेवा जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारा सर्दी है या फिर बारिश हो रहा है, उसमें हम छाता पकड़े हुए हैं, उस छाता में हम जा रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं अभी तो मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा, बोलेगा अरे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जब इस तरीके से प्रचार करने आते हैं इवन दो लोग हालांकि फिर भी हमें भगा दिया जाता है, बोलते हैं निकलिए यहाँ से. Once the rain was so strong, it was little above 0, maybe 2-3 degrees, and it was strong wind. I had my umbrella, strong umbrella, so it could hold the wind, but the rain was not falling like this, it was falling like this. जा रहा था तो जो रेन थी बहुत स्पीड बहुत थी, लेकिन मेरा जो अम्ब्रेला था वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो जो बारिश थी वो वर्टिकल नहीं था, 90 डिग्री नहीं था, वास्तव में ऐसे हॉरिजॉन्टली. And I couldn't wear a dhoti, so I had my winter trousers like you use for skiing, and they were waterproof. तो मैं जो विंटर में जब पुस्तक वितरण करने गया था तो फिर मैं कपड़े जो थे वो वाटरप्रूफ वाले पहना हुआ था. So usually when you distribute with umbrella, you remain dry. Maybe your shoes will be a little wet. तो जब हम इस तरीके से अम्ब्रेला पकड़े होते तो हम सोचते हैं हम तो सूखे होंगे. At that time, from here down, everything was wet, and although it was waterproof, it went through. मैं लेकिन फिर भी मैं जब अम्ब्रेला पकड़ा हुआ उसके बाद जो भी मैं पूरा गीला हो गया हूँ और मैं वाटरप्रूफ कपड़े पहना हूँ, उसके बाद भी अंदर वो पानी चला गया. So then you think, what I'm doing here, this is too much. और तो जब इस तरीके से हम तपस्या कर रहे हैं तो हमारे मन में विचार आ रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया. But then you understand, okay, I'm doing this for Krishna. This understanding gives you some bliss, I am doing this, I'm allowed to do this for the pleasure of Krishna. I'm here for Krishna. And this, you feel some happiness. लेकिन जैसे ही हम ये
ऐसी कठिन तपस्याओं में विचार करते हैं कि अभी मैं ये कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण से संतुष्ट होंगे, तो वो जो विचार है ये अपने आप में हमें बहुत आनंद का, हमें इससे आनंद का अनुभव होता है. And then if you meet someone, you know, after many refusals, you meet someone who is like, wow, what is this? I really want this. Then you feel it's really worth of that. Because if you would escape, that person wouldn't get the chance to meet Krishna. तो जब आप तो इतने सब रिजेक्शन, रिफ्यूज, इतने सब मना करने के बाद फिर किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो बोलता है कि यस, मैं ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्चर्स है, मैं इसको चाहता हूँ, तो मैं वास्तविक में अनुभव. Okay, so thus we have been speaking about some sources of distress and sources of happiness. तो अभी तक हमने चर्चा किया कि वास्तविक में स्रोत, दुख का स्रोत क्या है और सुख का स्रोत क्या है. And we all want to be happy, yeah? हम सब यहाँ संतुष्ट होना चाहते हैं. But still, the greater principle is that we want Krishna to be happy. Greater principle is that we want Krishna to be happy. हाँ, इससे भी हम सब संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन इससे ऊपर का क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या है, हम कृष्णा को संतुष्ट करना चाहते हैं, कृष्ण संतुष्ट हो. So, even actually, the more we forget our own happiness and think about Krishna's happiness, the more actually we ourselves will become automatically happy. तो इसी तरह वास्तविक में जब हम अपनी खुद के संतुष्टि ना सोच के भगवान की संतुष्टि को सोचते हैं, तब हम वास्तविक में खुद बहुत संतुष्ट होते हैं. Okay, this topic could be elaborated it will be elaborated for the rest of your lives. You know, you will dig deeper, you know, and get more from it. तो ये जो विषय है, इससे हम इसको आगे पूरे लाइफ में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे जीवन में सारी चीजें क्या है. Few drops for now. अभी के लिए बस छोटी सी कुछ ड्रॉप्स. Different drops than which we spoke about, you know. और हम दिन वाले लेक्चर में These are drops of Amrita, you know. This is the real source of nourishment for the soul. तो ये वास्तविक में जो अमृत की बूंद है, वो सब हमारे आत्मा के वास्तविक में नरिशमेंट है. हरे कृष्णा. किसी को कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं. किसी को कुछ प्रश्न. If there is one boy. Prabhuji, my question to you is this, that Maharaj often stated that devotees in the time of the 1980s, they are very enthusiastic. Who stated? His Holiness Bhakti Vikas. Okay. In 1980s, the devotees were very enthusiastic. Yeah. Devotees are full of enthusiasm, full of sublime. They do the preaching, which is very results are very sublime, and they do the full of enthusiasm, full of devotedness to the Krishna. So, and nowadays we can see that devotees are not so much that they are very enthusiasm towards the preaching and towards all and all. So what's the differences between at that time and now? And some of the devotees at that time, they are even not meet Prabhupada, but they are also very do the enthusiastic. Yeah, I was not there in 1980. तो मैं उस समय, तो प्रश्न है कि हम देखते हैं श्री प्रभुपाद के समय में किस तरीके से जो भक्त हैं वो अलग अलग सेवाओं में, प्रचार में कितना उत्साहित. तो वो अभी के जो हम क्रियाओं में जो देखते हैं इस तरीके से उत्साह है सेवाओं में, उसमें क्यों अंतर है, जो कारण क्या है. तो मैं तो उस समय नहीं था 1980 के समय. It was still deep communism in Czech Republic. तो उस समय बहुत गहरा कम्युनिज्म था चेक रिपब्लिक में. And I was small kid. और मैं उस समय बहुत छोटा बच्चा था. I had no idea about Krishna. मुझे कोई आइडिया नहीं था कृष्णा का. I wanted to be an Indian. That's true. I wanted to be an Indian when I was in 1989 already, maybe when I was 8, 9. I wanted to be an Indian, but red Indian. You know red Indian? From USA, from America, in Native American. That I wanted to be. We call it Indians. तो 1918 के समय जब मैं 8 या 9 साल का था, तो मैं वास्तविक में इंडियन, भारतीय बनना चाहता था. और वो कैसा रेड इंडियन. I was attracted to that culture, you know, bow, arrow, feathers in the hair. And anyway, I was. So
Yeah, devotees were very enthusiastic. I think still this momentum from Prabhupada just being there few years ago was still very much there. Yeah, this momentum from Prabhupada being there, in 77, 78, still it was not so big gap, so that the devotees was still full of that energy. लेकिन अभी भी वो बहुत बड़ा गैप नहीं है 1977 से अभी तक, तो बस अभी धीरे-धीरे मोमेंटम धीरे-धीरे अभी भी लोगों में बहुत सारा उत्साह है. And also, today, of course, the ISKCON became a very big movement with many big challenges also. तो जैसे जैसे ISKCON बढ़ेगा तो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत सारे challenges. And whatever gets big, there will be always, most of the people will have tendency to go the easy way. तो जैसे जैसे ये मूवमेंट बड़ा हो रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी टेंडेंसी होगी सरल रास्ते पे जाना. And tendency will be that most of the people will be and remain kanishta adhikaris. तो जो वृत्ति है वो वृत्ति टेंडेंसी वो क्या रहेगी, कनिष्ठ अधिकारी पे रही रहना. And this can become mainstream, that you will, the liberal concept and loose devotional service will become the mainstream, and then the enthusiasm for the heavy work will be lost. तो इस तरीके से हम स्थिरता या लिबरल हो जाएंगे और जो हमारी भक्ति है वो चली जाएगी, और भक्ति जाने के बाद फिर हम जो हैवी कार्य है उसको करने के लिए उत्साही नहीं होंगे. And enthusiasm, the enthusiasm will shift, because some enthusiasm is there in the soul, so it will be shifted to some more material things. तो जो उत्साह है भक्ति में जाने के बाद, भक्ति जाने के बाद वो उत्साह जो आत्मा में है, आत्मा का स्वाभाविक स्थिति, तो वो उत्साह फिर शिफ्ट हो जाएगा भौतिक चीजों में. So you will be enthusiastic for kirtan, but for the sweet, nice, melodious kirtan with nice voices and nice instruments and boys, nice tattoos and nice beards, and ladies, nice saris or gopi dresses and dancing and this and that, very, very, very soft, very mellow, very sweet. तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छा गाना, कीर्तन और दाढ़ी और इस तरीके टैटू और ये सब लगा के, माताएं हैं अलग अलग ड्रेसेस पहन के डांस करना, तो ये इस तरीके से हम बहुत आनंद अनुभव करेंगे. But when you have to go to apartment building to ring the bell, and offer a book, that you don't want to do. I'm not enthusiastic for that. तो लेकिन उत्साह कीर्तन में था इस तरीके से, लेकिन जब हमें पुस्तक वितरण के लिए भेजा जाएगा और ऐसे अपार्टमेंट में रिंग बजाना है और कोई भी नया व्यक्ति आएगा उसको बुक दिखाना है, उसके लिए हमारा उत्साह नहीं बचेगा. But still, I think there are many devotees today who are as enthusiastic as the devotees in 80s. तो हम अभी भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो 1980s के समय में जो भक्त उत्साही रहते थे, वो उतना ही उत्साह उनमें अभी भी है. I think your temple is an example of it. मुझे लगता है कि आपका मंदिर ही इसके लिए उदाहरण है. Everybody is jumping during the kirtan, up and down and playing mridanga and just enthusiastic. तो जिस तरीके से मैं देखता हूँ कीर्तन में बहुत सारे भक्त लोग कितने अच्छे से जम करते हैं, मृदंग बजता है और हर एक भक्त उत्साही दिखते हैं. So many preaching going on, and not some, adjusted preaching. You study, so you have good career, and you give us some nice money. This is your service to Krishna. तो और साथ में हम देख सकते हैं कितना सारा प्रचार चल रहा है, और उस प्रचार में कोई इस तरीके से नहीं है कि आप अपना बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अब वो पैसा हम लोग को दीजिए, इस तरीके से प्रचार नहीं है. Of course, temple needs money, but also we have to tell you that this is a slaughterhouse. These universities, these colleges, this is a slaughterhouse. You have to be very careful. तो यस, वास्तविक में मंदिर को पैसे की आवश्यकता है, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जो स्कूल कॉलेज है ये तो स्लॉटर हाउस है. Yeah, the teachers are butchering you like this, one, a second, third, butchered, just gone for just slaves of the country. तो किस तरीके से जो कत्ल खाने में जो काटते हैं, तो इस तरीके से वो एक एक को काटते जा रहे हैं और फेंकते जा रहे हैं. So there are many devotees still very enthusiastic, and even just from the books, if he will be sincere, he can get a great enthusiasm.
तो अभी बहुत सारे भक्त हैं जो पूरी तरीके से उतने उत्साही हैं, और ये जो पुस्तकें हैं इनको पढ़ के हम उतना ही जो महान जो उत्साह है उसको दे सकते हैं. So good old days, these were good old days, but now we have good present days also. तो वास्तव में गुड सारे दिन अच्छे हों, लेकिन प्रेजेंट जो डे है उसको अच्छा करना है. And even better days are ahead of us. Yeah? Even better days are waiting for us. और जो वास्तविक में जो बहुत अच्छे बेटर डेज हैं वो हमारी प्रतीक्षा करेंगे. Because we will serve more, we will purify our hearts more, and we will do more for Krishna. अगर हम सेवा करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, तो वास्तविक में हम बहुत सारी. We will remember how it was nice when we were young and devoted to Krishna, and it was so nice to come to devotional services. It was very inspiring and exciting. तो वास्तविक में ये युवा अवस्था में तो भक्ति करना, इस मूवमेंट से जुड़ना, ये वास्तविक में बहुत इंस्पिरेशन है. It should not be that, oh, it were such a nice days and now I'm completely doing nothing and not inspired. And no, we will be inspired. We will be still going through some spiritual adventures, we can say. तो ऐसा नहीं होगा कि हम पहले बहुत इंस्पायर्ड थे, अभी इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है. वास्तव में बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी. Okay, time to go for class, I guess, or no, Arati, and then you have. They go to school today? No, so Saturday. Nice college. Go to college? Somebody is going? Yeah. Sorry for you. I also had to go. It was horrible. My happiest day was when I went last day in the college. That was my happiest day. I went directly to temple for Bhakta program. It was my happiest day. It was like, is this real? 13-14 years I was going to school each and every day. I don't have to now. Is this real or is it a dream? I couldn't believe it. I couldn't believe it. I was so happy that I just couldn't comprehend. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srilaprabhupad ki jai.